to start this class late due to interruption in connection. So we are doing the vegetation and wildlife. For today class, we will discuss about the grasslands, and human settlements. So first of all, I will revise here of the previous topics. Yesterday, I was discussed here about the few in yesterday class. I was told you types of forest. So at first, let's see. Our Earth is like a sphere, and we have divided it into several temperatures. So this is our equator of the Earth. It's 0 degree. This is Tropic of Cancer. This is Tropic of Capricorn. It's Tropic of Cancer. It is Tropic of Capricorn. In Hindi, it is known as Kark Rekha. Here, it is known as Makar Rekha. ये हमारा 0 डिग्री जो है हमारा इक्वेटर, इट्स इक्वेटर, और विषुवत रेखा एवं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 66 degree and half, 66.5, 23.5, 23.5, 66.5. You may write also. Now it's our polar region or frigid zone. It's our polar region. Or frigid zone. So frigid zone. So it's a polar region or frigid zone. बोले तो ठंडा प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश है ना. तो एक्चुअल में according to the temperature zone, yesterday we will try to learn about the different forests are found in the world. So at first we know about tropical evergreen forest. Here few pinpoints or important points I will discuss here. Okay, so the important thing is tropical evergreen forest. So what is tropical evergreen forest actually? This region is also known as torrid region. Because these tropical evergreen forests are found between equator to tropics. And all we know, this is the equator, and this region
receives more heat and more rainfall throughout the year. ये जो हमारा क्षेत्र है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सालों भर जो है काफी क्या होती है, वर्षा भी होती है और धूप भी होता है, जिस कारण यहाँ पे क्या है, बहुत ही क्या होगा, डेंस वेजिटेशन होगा। कैसा होगा? डेंस वेजिटेशन, यानी सघन, सघन बोला जाए तो सघन वनस्पति यहाँ पे पाए जाएंगे, वेरी डेंस वेजिटेशन। सो आपने देखा, एक्चुअली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स, फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स। क्लियर? नाउ इसका फीचर्स क्या होगा? फॉरेस्ट विल बी डेंस होगा, फॉरेस्ट क्या होगा, काफी डेंस होगा, सघन होगा। तो जब सघन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली दे फॉर्म कैनोपी, दे फॉर्म कैनोपी, दे आर सो डेंस, the trees are so close to each other, there are no space, there are no space, and sun rays do not penetrate or do not touch the surface of the forest. For example, Amazon, है ना, for example, we take Amazon forest, है ना। तो जो भी इस क्षेत्र में, है ना, इक्वेटर से ट्रॉपिक के बीच जो भी ये क्षेत्र होगा, वहां पे काफी ज्यादा क्या होगा, सघन, यानी कि डेंस फॉरेस्ट होगा, वन जो है काफी ज्यादा सघन होगा। और इस बीच क्या होगा, वर्षा और धूप, क्योंकि बारिश और गर्मी सालों भर यहाँ पे क्या होता है, उपयुक्त मात्रा में होता है, जिस कारण हर रोज बारिश होती है, हर रोज बारिश होगी। उसके कारण क्या है कि एवरग्रीन नाम दिया गया है, सदाबहार वन। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे हमारे, दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, साल भर जो है ये क्या है, अपने पत्तियों को नहीं गिराते हैं, अपने पत्तियों को क्या है, वो वहां पे नहीं गिराते हैं, पत्तियां वहां पे नहीं झड़ती हैं। तो ये हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ। अब चूंकि ये इतना ज्यादा सघन है, तो यहाँ पे जो भी एनिमल्स वगैरह क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे मंकी, रोडेंट्स टाइप से, है ना, मिलेंगे, है ना, बड़े, क्योंकि बड़े वहां पे क्या होंगे, दे कांट मूव, दे कांट रन, है ना। ये हुआ हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हालांकि कल ये चीजें बताई गई थी, फिर भी मैं इसे रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद हमारा क्या था, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये बोले तो क्या है, पर्णपाती वन है। क्या है? डिसिडुअस मतलब पर्णपाती, जो अपना पत्ता गिरा देते हैं, जो अपना पत्ता क्या है, गिरा देते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना। एक्चुअली इसे क्या बोला जाता है, हम बोल सकते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, है ना, मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, है ना। डिसिडुअस फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं एक्चुअली, है ना। और एक्चुअली में ये हमारा जो है कहाँ पे, तो जो नॉर्थ इंडिया है या नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, जो सेंट्रल अमेरिका पार्ट है, वहां पे पाए जाते हैं। और एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, द वुड्स आर, जो वुड्स अवेलेबल है, आर सुपीरियर फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, है ना, एंड एनिमल्स सच लाइक एलिफेंट, टाइगर्स आर फाउंड देयर, है ना। तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, है ना। सो here actually the woods are also found, soft and hard woods are also available in the tropical deciduous forest. Deciduous forest, the soft wood and the hard woods both are available there. Now after that, the same division of between the temperate zone, temperate evergreen forest and temperate deciduous forest. So let's see about basic concept and few basic idea, few points on what is the temperate evergreen forest. Evergreen means trees do not fall their leaf या do not shed their leaves throughout the year, मतलब सालों पर यहाँ पे क्या रहेगा, पत्तियां रहेंगी पेड़ में। तो एक्चुअली जो टेम्परेट, जो एवरग्रीन जो है फॉरेस्ट, वो एक्चुअली प्रेजेंट होता है, लोकेट होता है मिड लैटिट्यूडिनल, जो हमारा क्या है,
कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज एंड कहां पे, ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। तो ये क्या है, मिड जो लैटिट्यूडनल जो कोस्टल जो एरिया है, जो मध्य अक्षांशीय जो तटीय जो क्षेत्र है हमारा, कहाँ पे, जो ईस्टर्न जो उसका पूर्वोत्तर जो भाग है, जो किनारा है कॉन्टिनेंट का, उन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली खास करके हमारा यूएसए, ब्राजील है, चाइना वगैरह में ये पाया जाएगा। और एवरग्रीन है, तो सोच लो यहाँ पे पेड़ वगैरह है ना, यहाँ पे भी थोड़ा तो डेंस नहीं होगा, लेकिन टेम्परेट है। टेम्परेट कहने का मतलब हिंदी में बोले तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों हो, है ना, शीत और उष्ण दोनों हो कहीं ना कहीं, है ना। उष्ण का मतलब गर्म, शीत मतलब थोड़ा ठंडा, है ना। तो हालांकि सघन होगा, लेकिन इसके जैसा तो सघन होगा नहीं। ठीक है, तो मेनली जो है ना, इस चैप्टर में खास करके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, सिविल सर्विसेज या पीसीएस वगैरह में, तो या तो कुछ साधारण सिंपल सा क्वेश्चन जोन वाइज, यूपीएससी में ज्यादा करके कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछता है ना। इसमें ज्यादा करके कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज और स्पेशली इन यूपीएससी फ्रॉम दिस चैप्टर, conceptual questions has been asked. Okay, clear? Now, उसके बाद क्या था हमारा, टेम्परेट एवरग्रीन के बाद क्या था, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट था। क्या था, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, है ना। टेम्परेट टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट था, है ना। तो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में दिस फॉरेस्ट आर फाउंड at the higher latitudinal area, especially in the northeast part of the continent, such as यहाँ भी यूएसए, न्यूजीलैंड, ब्राजील वगैरह में, है ना। तो एक्चुअली में कहाँ पे, तो हायर लैटिट्यूडिनल एरिया में, है ना, हायर लैटिट्यूडिनल एरिया, है ना। और वो स्पेशली वहां पे नॉर्थ ईस्ट में जैसे पाया जाता है ना, ये खास करके वहां पे जो पाया जा रहा था हमारा ईस्टर्न पे, ये ना नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है ना, नॉर्थ ईस्ट में, किसके, कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो हायर लैटिट्यूडिनल एरिया स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट सच एज यूएसए, ब्राजील, न्यूजीलैंड, है ना। तो हायर लैटिट्यूड में और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। आफ्टर दैट हमारा क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं, मेडिटेरेनियन बोला जाए तो, मेडिटेरेनियन यानी जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, जो रीजन है, उसके बीच एक्चुअल में पाया जाता है, तो साउथ एंड साउथ वेस्ट में, वेयर, साउथ एंड साउथ वेस्ट में such type of forests are located, are found in the region, especially in the continent of south and southwest continent. Clear? Or also Mediterranean forests are also known as orchards. Orchards. R here silence. Orchards. Why orchards? Because favorite for, it's a favorable place of for the farming of, it is all we know very well that it is worldwide for the farming of citrus fruit. Worldwide for the farming of citrus fruit. Worldwide for the farming of citrus fruits, especially grapes, olive, this type of citrus, oranges, orange. Now we have discussed about coniferous or boreal and coniferous forests.
Boreal and coniferous forest. Actually, this forest where it is located, boreal or coniferous forest, gives something. I, I was told earlier where is the boreal or coniferous forest located. So, boreal and coniferous forests are located between 50 to 70 degree of latitude in the north of equator. In the north of equator, also known as taiga forest, also known as taiga forest. So these are the few important points you must keep in your mind. So now let us discuss about the grasslands. The grasslands. So grasslands. Grasslands, mainly the grasslands. The grasslands are mainly temperate grasslands, and tropical grasslands, tropical and temperate, tropical grasslands. Now, thorny thorny bushes, serves. So, what is a tropical grassland, temperate grassland? Actually, temperate grassland actually form are found either on either equator side till tropics region, है ना, on either equator side to till ट्रॉपिक रीजन तक फैला होता है, इक्वेटर साइड के अगल बगल और ट्रॉपिक तक ये जो है ग्रासलैंड फैला हुआ होता है. एक्चुअली हियर such type of grasslands obtain or receive low or moderate amount of rainfall. Low or moderate amount of rainfall. So now I am writing here. So what is the most tropical grassland? What is tropical grassland? Actually, such type of grasslands are found between on the either sides of equator till the tropics or tropics till tropics. Especially क्या होता है? These grasslands obtain low to moderate amounts of rainfall. These grasslands obtain low to moderate amount of rainfall. The grass in these regions are about 3 to 4 meters in height.
वुड्स वेयर अब चूंकि 3 to 4 मीटर्स इन हाइट होंगे, हाँ, तो यहाँ पे जो जानवर एक्चुअली में पाया जाता है मेनली एलिफेंट भी होगा, टाइगर भी होगा, जेब्रा होगा, जिराफ होगा, है ना। तो दिस आर द एनिमल्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड तो ऐसे भी हैं कि है ना 30-30 फीट तक भी है, 20-20 फीट तक भी है। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड बिटवीन on the either side of equator till tropics. These grasslands obtain low to moderate amount of rainfall. The grass in these regions are about 3 to 4 meters in height. Elephant, tiger, zebra, giraffe. Yeah? These are the famous fauna found in such regions, in such grasslands. So let us see now the temperate grassland. Tropical grassland we have seen equator to tropics. Equator to tropics. Now temperate grasslands. Temperate grasslands. Grasslands are found in mid-latitudinal region and in the interior of the continent and in the interior of the continent. Okay. Actually, name here temperate grassland. So here rainfall of this region, these grasslands, actually in comparison of tropical grassland, they were, yeah, they become shorter but nutritious. The graph in these regions are shorter and nutritious. The main fauna are found in such type of region of wild buffaloes, bison, wild buffalo. These are the main fauna groups found there. So temperate grassland, tropical grassland, the types of forest and thorny bushes. I think all you know very well what thorny bushes. Thorny bushes मतलब कंटीली झाड़ी. So especially these are found in the desert region. These are found in the desert regions, especially Sahara, है ना, काला हरी मरुस्थल जो भी है ना, सहारा डेजर्ट, काला हरी डेजर्ट और जो भी डेजर्ट है ना, तो एक्चुअली क्या होते हैं these areas they receive
मिनिमम रेनफॉल है ना, मिनिमम रेनफॉल एंड थॉर्नी बुशेस आर जो भी रेगिस्तानी जो भी एरिया है स्पेशली आर लोकेटेड on the western side of the continent. We know that deserts are located commonly in western margin, western side of western margin of the continents. So thorny bushes और भी नो वेरी वेल है ना, तो आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह बबूल वगैरह कंटीली जो झाड़ियां होती कंटीली जो पेड़ थे तो these are found in the desert regions actually. Rainfall, they get rainfall very low, receive rainfall negligible समझो है ना, मिनिमम कैप्स. अब जो सर्फ्स हैं एक्चुअली थोड़ा सा उसमें है ना, एक्चुअली सर्फ्स को जिसको की एक्टस से टुंडा वेजिटेशन बोला जाता है. तो जो वर्ल्ड द रियरेस्ट रीजन जो है हमारा, जो नेचुरल वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन आर रियरली फाउंड इन द पोलर रीजन एक्चुअली. So the natural vegetations are rarely found in the polar region. So mainly mosses, lichens, and shrubs are commonly grow in the polar region, especially in the summer season. And those vegetation are also known as tundra region. Tundra vegetation. You know, those regions are also known as tundra region and tundra vegetation too. So all the especially the fauna groups are there. Arctic owl, snow foxes are also there. Polar bear are also there. So these are the few fauna groups are found there in the polar region. Surfs are actually mosses, lichen, and surfs. Actually, they are found in the rare region of the earth. Especially, they are found in the polar region. So that's all the few things about the regions, and today we have observed. And a simple chapter I'm going to finish here. I'm going to add the human settlements. The human settlements. The human settlements. The human settlements. The human settlements mainly there is few classification. So it's a permanent settlement. Or it may be temporary settlement. Temporary settlement. Permanent or temporary settlement. Now after that, where the people will reside permanently. So people will reside permanently in urban settlement. Or in the rural area or rural settlement. Now in rural settlements there are also two divisions: compact settlement and a scattered settlement. So the things a temporary settlement, especially for about the adventurer
adventurer, and explorer. Yeah. Especially those person, they go to the forest and do something for their more swimming and for dangerous. They also go for survival in a tough condition and also for the research, also for photo shoots. So these are the adventurers and explorer. So they go there. In permanent settlement, actually in urban settlement or rural settlement, all we know that the dense population of the world or a large number of population of the huge population resides in the plain areas, or on the bank of rivers. And because people know, people people क्या करते हैं determine choose the facility, that road are there, connection or transport availability is there or not, hospitals are there or not. So they see transportation facility, the health facility, education facility, network areas today in the world today, in today's world. They will also observe, they will also see the internet connections, or lots of many things, lots of many. So in urban settlement, especially peoples were engaged in service sector, in trading sector, some are also in jobs. So various workers or various type of opportunity in the sector of field or work are very large, and the income of the people who reside in the urban settlement have more in comparison to people reside in the rural settlement, in rural settlement. So rural settlement, especially the main sector, main things for livelihood, other people are especially depend on farming sector too. They are laborer, they are farmer, they do some dairy work, they they do fish production, they are participating fish production, pisciculture. So all these kinds of activities are sold in the rural settlement. Compact or scattered means some regions are very peoples are gathering from because the houses were very close to each other, and the population were so dense. And a scattered settlement, it means the people are some in the hilly region or in the forest region, in on the island. So these are the complex settlement means the a dense population are living together. The houses are too close, so the consumption were high here. Consumption will be higher here, and here the low consumption. So all these things are some basic idea. If you have, you observe the things. Now you can easily access. Now you can easily think, analyze about your family, about your society, all the economical activities, political too. So these things are. So today, now I have started the chapter, the human settlements. So the basic things I hope you got. And tomorrow we will discuss about transportation system, transportation system. So all we know mainly transportation system, roadways, railways, airways, waterways, and communication system too. I will discuss tomorrow. So communication, all we know very well. So we are in the advanced age. We are in the technological area. We live in this technological world. So all these things will be discussed in more amount. Sorry, the further I will discuss tomorrow. Okay. So all the best. Take care. Bye.